No worries. So, right. Mm, when it comes to lighting, first of all, we'll have some general discussion about lighting. Okay. Getting into my Unreal or any particular place, okay, it's a different thing. But other than that, generally, हमारा रियल लाइफ में लाइट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट ऑल लाइट्स यू हैव रियल लाइफ में, क्या लाइट्स होते हैं? सनलाइट, राइट? रियल लाइफ में होते हैं वन एंड द ओनली मेन लाइट नेचुरल बोले तो वी वी हैव सनलाइट. लेकिन हम लोग जब सनलाइट में जाते हैं तो क्या होता है? वी विल हैव काइंड ऑफ ए बाउंसेस एंड एवरीथिंग, राइट? अपने ऊपर बाउंसेस आते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल लाइट, अगर ये रूम में अगर मैं एक सिंगल लाइट लगा दिया, ओके, सो शैडो विल बी हियर. Obviously shadow will be opposite to the light, right? Always. So this particular area is completely dark. लेकिन जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो वैसा रहता है क्या? नहीं रहता. So this side also you will get some glow. What we'll call that as a bounce reflection. Reflection नहीं, bounce. What we'll call them? Bounce. उसका और एक नाम है fill light. ओके, जब शैडो हमको 100% हो जाता है, देन इट इज समथिंग लाइक ए कंप्लीट डार्क. कभी भी अपना सीन 100% डार्क नहीं रहना चाहिए. सो यू नीड टू फिल ए बिट लाइट. सो उसके लिए हमको दो एलिमेंट्स हैं, दो बातें हैं उसके लिए. आइदर इट कैन बी ए फिल लाइट और बाउंस लाइट. ठीक है. एंड वन मोर, और एक चीज होता है. फॉर एग्जांपल मेरा रेड वॉल है, अगर मैं रेड वॉल की बॉडी में चले गया, right? So what happens? That particular red thing will spill on me. Okay, red thing will be spill on me, right? If I go to green, green will spill, whatever it is. So इसको हम लोग बोलते हैं global illumination. What you call global illumination? Simple word में हमको बात चल रहा है ना. Global, global में जो भी होता है वो illuminate होता है because of the sunlight. एक ही बात है कि सनलाइट उसके ऊपर गिरने से ये बाउंस लाइट क्या करता है, व्हाटएवर वॉल पे जो है वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है. सो दैट इज समथिंग लाइक ए व्हाट वी कॉल एज ए जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन. सो ये जो चीजें हैं, जो बाउंस लाइट है, जो भी है, ये हमें नेचर में डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन सीजी में नहीं मिलता. सीजी में हमको थोड़े ऑप्शंस इनेबल करना पड़ेगा, तभी हमको मिलेंगे. ठीक है. लेकिन ये जो बाउंस लाइट है उसको हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है. इवन इन द स्टूडियो लाइट्स में तो क्लियर है, आपको कंपलसरी 3 पॉइंट लाइट मिलता है. एक कैरेक्टर को एलिवेट करना बोले तो हाउ मेनी लाइट्स यू हैव? 3 लाइट. व्हाट आर दैट लाइट्स? की लाइट, backlight, good. And one more is fill light. So we have 3 lights. One is key light, one is fill light, one more is backlight. So fill light को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाउंस भी बोल रहे हैं. बैकलाइट को हम लोग और एक बार भी बोलते हैं रिम लाइट. जब हमारा पीछे जो लाइट आता है, that will give you a light on your shoulder. ठीक है. उससे क्या होता है, whatever the back element is there, उसके और आपके बीच में जो डिस्टेंस है, that can be elongated. That will happen because of the backlight, or we'll call that as a rim light. ठीक है. समझ में आ गया? एक की लाइट है, एक बाउंस लाइट है, एक रिम लाइट है. समझ में आया? एक बंदे को अगर हमें एलिवेट करना है तो ये 3 मिनट मेरे क्लास में आई टेल यू दैट वन हाउ टू डू दैट आल्सो, राइट? डन. सो नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू ए सॉफ्टवेयर, ओके, अगर हमारा रियल लाइफ में इंटीरियर में आए तो वी हैव ए ट्यूब लाइट, राइट? वी हैव ए स्पॉट लाइट, राइट? वी हैव ए बल्ब, राइट? दीज आर द 3 एलिमेंट्स. स्पॉटलाइट को क्या होता है? लाइट डायरेक्शन एक ही साइड आता है. बल्ब का क्या हो जाता है? ऑल साइड्स जाता है, राइट? ट्यूबलाइट का क्या होता है? एक ही साइड आता है, ऊपर नहीं जाता, राइट? इट विल कम डाउन.
So based on these things only, the artificial lights in a CG world also it is been created. Understood? जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसी को कॉपी करते हैं हम लोग. Okay, we will not create something out of the box because बंदे को समझ में आना चाहिए, right? So something like mixture of these things we can create a something out, but basic वही lights रहेंगे. Is that clear? Right. Now उसमें हो गया direction light is your sunlight. Direction light बोले तो क्या है? It's your sunlight. Direct एक ही बात है direction light. Okay. Direction light explain कर रहा हूँ मैं. When you are going for a direction light, will the direction light die? Will the sunlight die after certain distance? थोड़े दूर के बाद sunlight मर जाता है क्या? Light will die or what? No. Sunlight will have only direction. It will not have any depth. तो वो डेप्थ को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे डीके. वो डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट का डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? डीके. ये ट्यूबलाइट को डीके है. मैं इससे इतना दूर चले गया तो मेरे ऊपर लाइटिंग कम हो जाता है. मैं जब उसके नीचे आता हूं तो लाइटिंग ज्यादा हो रहा है. अगर मैं सनलाइट में जाऊं कितना दूर भी भागो मेरे ऊपर एक ही टाइप ऑफ लाइटिंग आएगा unless until there is something a cloud or a building in between or a tree. Something comes in between, then only it can obstruct. Otherwise मैं कितना भी दूर भी भागूं सेम रहेगा. ओनली सनलाइट का क्या होता है? यू विल चेंज द डायरेक्शन. सो हम लोग जब हम लोग सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जब हम लोग डायरेक्शन लाइट लगाते हैं, वी विल जस्ट व्हाट वी विल डू, ओनली डायरेक्शन चेंज करते हैं. किसके लिए? सन को. अंडरस्टूड? क्लियर? राइट. पॉइंट लाइट हो गया, बल्ब है. स्पॉट लाइट हो गया, स्पॉट है. राइट. रिम लाइट हो गया. ये रिम लाइट, रेक्ट लाइट जो सॉरी रेक्ट लाइट जो है उसको आप अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू माया, ओके, इन दैट पर्टिकुलर कॉल्ड लाइट इज कॉल्ड एज एरिया लाइट. ओके, इसमें रेक्टेंगुलर लाइटिंग बोल के बोलते हैं, उसका अलग नाम है. और एक क्या है? एरिया लाइट. दैट्स इट. ओके, बोथ वर्क इज सेम. अंडरस्टूड? राइट. ये किस किस के जगह पे काम करता है? राइट नाउ टीवी से फ्लैट वाला लाइट आ रहा है मेरे ऊपर. टीवी से मुझे लाइट आना है, ठीक है, मेरे ऊपर गिरना है. मैं बल्ब लगा सकता हूँ क्या इधर? नहीं. मैं स्पॉटलाइट लगा सकता हूँ? नहीं. आई कैन कीप ए रेक्टेंगुलर लाइट. जब आपका स्क्रीन के ऊपर से प्रोजेक्शन हो रहा है, देन यू कैन यूज देयर ए रेक्टेंगुलर लाइट. ये डोर है, डोर से मेरे ऊपर लाइटिंग गिरना है, ठीक है. सनलाइट में बाहर लगा दिया, रियल वर्ल्ड में भी सॉरी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मैं सनलाइट लगा दिया, लेकिन वो सनलाइट अंदर तक नहीं आएगी. मुझे आर्टिफिशियल लाइट्स क्रिएट करना पड़ेंगे बिकॉज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट, सीजी इज डिफरेंट. सो सीजी में अगर मेरे विंडो से स्पेसिफिक लाइटिंग दिखाना चाहता हूँ, देन आई विल कीप ए एरिया लाइट. Otherwise, I'll keep a rectangular light over there. Understood? So this is about the lights. So when you get into the skylight, SDRI, and these three whatever is there, right? This I will explain you in the software. तो जब वो क्रिएट करते हैं तो एक अलग से पाथ दिखता जाता हुआ, जैसे मैं बाहर रेक्टेंगल लगा दूंगा तो एक ऐसा अलग से पाथ ग्राउंड पे आता हुआ दिखता है अलग से. लोग उसी के लिए करते हैं. समझा नहीं. तो इसका मतलब कि सर आप सनलाइट की बात कर रहे हो, सनलाइट हर जगह पे नहीं आती. हाँ. सीजी बोल के तो हम अलग से लाइट लगाते हैं. ओके. जैसे अभी रियल वर्ल्ड में तो हमें यहाँ पे अगर मतलब वहाँ शैडो वाले से मतलब तो रियल वर्ल्ड में जरूरत नहीं है लगाने की. अगर हम लगाते हैं अलग से तो उसके बाद हमें एक अलग से पाथ दिखता आता है लाइट का. तो जैसे कि ये लाइट है, यहाँ से मैंने इसको फ्लो करा तो यहाँ पे जब राउंड पाथ दिखता है लाइट का तो वो चीज हटाते कैसे? नहीं, उसको उसे हम लोग पेनुम्ब्रा बोल के बोलते हैं. जो भी लाइट से एक एरिया जब कट होता है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए पेनुम्ब्रा. पेनुम्ब्रा को कैसे रहते हैं? इन एंड आउट रहता है. पेनुम्ब्रा को कभी भी इन एंड आउट रहता है. मेरा ये बल्ब है, लाइट है, अगर मैं ग्राउंड के नियर लेके गया मुझे वो स्पॉट आता है, लेकिन क्या होता है वो ब्लर आता है. राइट. वो ब्लर मुझे इफ आई वांट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज ए पेनुम्ब्रा. ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूँ.
Okay, right now. So this is all about these particular lights. This I'll explain you in the software itself. Right now, whatever we are using in Unreal, अभी जो भी आप render देख रहे हो ना, it's all under Lumen. Whatever the lighting you are seeing, it's all under Lumen. Lumen के अलावा और एक कौन सा है? Lumen का कौन सा है? Path Tracer. Okay. We have पता है इधर. Okay. रे ट्रेस बोले तो बाकी लोगों को किसी ने okay. I will tell you about first of all these things. A lumen होने दीजिए, path tracer होनी चाहिए. Okay, we have V ray, we have mental ray. Okay, what we can say like red shift. So whatever these names I am telling, right? These all are called as a render engines. What all these all are? Render engines. ये render engines क्यों बनाया गया है? अभी हमारा गेम इंजन क्यों बनाया गया है? टू ऑप्टिमाइज, राइट? ये रेंडर इंजन भी ऐसे बनाया गया है कि दिस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दे हैव टू वर्क ऑन वन काइंड ऑफ पाइपलाइन. वो पाइपलाइन जब सक्सेस हो जाता है उसको बाहर रिलीज कर देते हैं प्रोडक्शन स्टूडियोज, राइट? लाइक दैट वीरे इज ए पार्ट ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन. एक एक प्रोडक्शन जब होता है रेंडरमैन बोल के है. ओके, पिक्सार वालों ने बनाया रेंडरमैन बोल के, राइट? रेंडरमैन इज एन अल्टीमेट थिंग लाइक one view if you render from all the sides of the camera the scene will render and one particular frame render हो गया तो आप किधर भी घुमा लो it is rendered, that's it. So that happened in renderman. लेकिन उससे थोड़े problems आए बोल के renderman hit नहीं हुआ है, ठीक है? I'm not getting into too deep into the render engines, but these all are called as a render engines. अभी मैं इससे पहले आपको GI बोल के बोला था, global illumination, final gathering, right? ये जो है फॉर एग्जाम्पल वन सीन जो भी होने दो, यू गो टू माया और एनीवेयर, वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज देयर, वन रूम इज देयर. ओके, ये रूम अगर कोई आके आपको बोले कि यार मुझे एक वीडियो बना के दे, हाउ यू आर गोना चार्ज देम? You are going to charge them, you are going to calculate them. That is based on the render. Final output will be calculated as per the render. बोलते जितना देर में रेंडर हो रहा है उसके हिसाब से करते हैं, राइट? सो द रेंडर इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेंडर को मुझे ऑप्टिमाइज, रेंडर कब लेट हो जाता है? व्हेन यू हैव मोर लाइट्स इट विल टेक मोर टाइम टू रेंडर. व्हेन यू हैव लेस लाइट्स इट विल टेक लेस टाइम टू रेंडर. दैट इज अ सिंपल लॉजिक. लेकिन मेरा रियल वर्ल्ड में बहुत सारे लाइट्स मेरे ऊपर बाउंस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इतने सारे आर्टिफिशियल लाइट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ. So when I'm creating so many lights, obviously render time is going to increase. So my budget is going to increase. Everything is going to increase, right? So how to optimize it? Then these render engines came into the picture. Okay. Software render में थोड़े प्लस पॉइंट्स रहते हैं. If you go to hardware render में थोड़े प्लस पॉइंट्स. Software hardware में कुछ पार्टिकल्स जो है वो रेंडर नहीं होते हैं. एक एक में एक एक प्लस पॉइंट्स है. वैसे ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये जो है ये रे ट्रेस में रहते हैं. GI and FG is a part of a ray tracing. रे ट्रेसिंग बोल के जो है ऑप्शन, उसमें जब आप एनेबल करते हो, सो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यू आर बाउंस लाइट्स एंड GI फाइनल गैदर, दीज थिंग्स विल बी एनेबल्ड. अंडरस्टूड? सो हमें वो कंपलसरी चाहिए. सो इसमें ये पाथ ट्रेसर जो है, ओके, दैट इज एनेबल्ड विथ ऑल दोस थिंग्स, बट इट इज वेरी कॉस्टली. क्या हो रहा है? पाथ रेसर का जो रेंडर है, आई विल शो यू इन द सीन, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉस्टली. Lumen is very budget friendly, even though when output is really realistic, but it is something like if it is taking enormous of time, industry will forget it, industry will vomit it, उसको निकाल देते हैं. सो अभी पाथ रेसर अभी अपडेट हो रहा है. Lumen से ज्यादा एडवांस्ड है पाथ रेसर. लूमेन से पहले आया है पाथ रेसर, लेकिन लूमेन में हमको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है. क्वालिटी वाइज पाथ रेसर इज मोर स्ट्रॉन्गर, बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम.
Got it? That is the difference. आपके Unreal में रहेंगे वो भी मैं अभी enable करके दिखाता हूँ, right? Done. So now whatever till now I have said, okay, I'll open the Unreal and I'll show it to you. Can I take a call बहुत बार मैं हाँ सर मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ हाँ उसी का मैं बोल रहा हूँ. I'll tell you. मुझे लगा था वो कन्वे नहीं कर पाए थे इसे हाँ मैं बता नहीं पा रहा नहीं था वही है पेनम्ब्रा एंगल मुझे पता है. Right. So तो मैं एक बेसिक सीन ले लिया, वेरी बेसिक सीन. So what I'm doing right now here, I'm just deleting all the lights. Skylight delete कर दिया. Okay. Right now, I've deleted all the lights. Right? There is nothing. Now I'm just taking one direction light. मैंने क्या करा? एक direction light दिया. Direction light, whatever the direction is there, how you can see when there is an object, right? So I'll just take one object here. Okay. See now, I can see a
light shadow based on my light. See, now if I just move here, my shadow is moving, right? Now, one more thing you remember, the moment when you are saying, talking about a light, लाइट जितना नजदीक हमारा रहता है उतना शार्प लाइट रहता है. द वे द लाइट इज गोइंग अवे, द लाइट इज बिकमिंग ओके बिगर. ओके, देन व्हाट हैपेंस, उसका सॉफ्ट लाइट आ जाता है, राइट? सो द लाइट हाउ मच बिगर इट इज, दैट मच सॉफ्ट. सो उसका हो गया रेडियस. फॉर एग्जांपल हियर यू हैव ये जो सोर्स एंगल जो है, ओके, राइट नाउ सी, if I'm moving, you can see, like, see, shadow is getting blurred here. See, can you see that? Shadow blur हो रहा है, right? So this, if you want to make your shadow blur, okay, this is a source angle. Okay, now I'll tell you in another lights also, you can understand. Now इसका intensity बढ़ाना है, so I can increase my intensity. If I want to change the color, I can change the color. ठीक है? This is what happening with the directional light right now. So ये जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, this all happened with a directional lights. Understood? Now if I just delete the directional light here, now what I am doing, I'll just get a point light here. See, right now I got a point light. See, when it is nearer to the floor, okay, you are able to see the light. When it is going away, so your light is becoming less. So because it has a decay, it is dying after some time. अगर मैं radius बोला था, right? Right now my radius is okay less. Now whatever you are asking, right, that will come here. Now this radius is there, right? So if I'm increasing this, see, can you see, like, here the distance, whatever it is there, see here what's happening? Now once if you increase this and if you increase this, your spread is going on. See, right now your spread is more and your source light is less. Still, right now you can get it, see, so soft. You are getting it very soft. Otherwise, it is becoming more harder, right? In this also, you can have the color change and everything same. Intensity will be the same here also. But in this, it is called as a source radius. There it is as a source angle. Why in the sunlight it is called as an angle? Because sun के लिए कोई radius नहीं है, वो किधर भी मरता नहीं है. It is something like it has continuity. So that is the reason sun has a source angle. But this particular light has the radius. Understood? Now, if you increase the radius, right now see, there are, as I told, two things are there, right? In and outbound range, right? So this one, see, right now, see, the light is getting more pointer, right here. Now, if I'm just reducing the source ka length, see right now, this particular part, you can understand more better way when it is a spotlight. See, right now my spotlight came, okay? Now you got a direct light over here on this. Okay, you got a direct light here. Now see here, there is an inner cone angle and outer cone angle. Now if I just like increase it, okay, and if outer cone को मैं decrease करा, देखो मेरा light कितना sharp हो गया है. Now if I increase the intensity, see it is so bright like a perfect, what is this? Yes, you can see like a perfect spotlight. इसको हमें, for example, if I want to make it increase, मैं outer को मैं spread कर रहा हूँ, so spread हो गया है, and मैं inner को और थोड़ा कम कर रहा हूँ. अभी देखो बहुत अच्छा soft light बन गया है, hard light से soft light बन गया है. If I am selecting this,
if I'm going exactly on the object. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, here I'll get one character also. Okay, so third person is there, not there, I'll just add one. Okay, third person to the same. ठीक है. So you can see the shadow right now. Okay, my shadow is sharper. Now if I select my spotlight, okay, now if I want to make my shadow blur करना बोलते क्या करना पड़ेगा मुझे? What? हाँ, वो क्या है, ऑप्शन का नाम क्या है? रेडियस. क्या है? सोर्स का रेडियस. सी राइट नाउ हो गया है, ब्लर हो गया है. सी, you can see the blur, right? Now it is sharp. The moment when the light is becoming bigger, where is the light? Here. Right now, see, you can see this outer spectrum is there, right? That is the main light. Now, if you just make it, वो जितना छोटा है उतना sharp बन गया है, जितना बड़ा है उतना blur बन गया है, right? To improvise that quality, I will tell you. Okay, this I am just explaining you the all the lights. So अभी point light क्या है पता चल गया हमको. Okay, spotlight क्या करता है पता है, right? Now the last, this one is a rectangular. Rectangular में किसके लिए बोला था मैं? For example, एक TV, okay, नहीं तो एक window. See, for example, from window when you are getting, your light will be like this, right? एक window से जब light आ रहा है इतना sharp आ रहा है, right? I'll do one thing. Okay, I'll just select this. I'll go to materials. Okay, I'll apply one sharp shiny material here. Now see, you can see your light here. Okay, you can see the reflection, right? Now if I just increase my this, sorry, here, if I go to my source width, if I increase, see, can you see here? मेरा लाइट क्या हो रहा है? मेरा लाइट का साइज बढ़ रहा है. Understood? It you can see it here, you can't feel it here, but actually your light size is increasing. ये हम लोग टीवी का पूरा एरिया लगा सकते हैं, उसको ग्लो बना सकते हैं. उधर से हमको ग्लो आगे आ रहा है. Understood this one? Now, and your question is something like ये आगे का लाइट कैसे जाए? ये आगे का लाइट मुझे चाहिए कंपल्सरी, इसीलिए मैं लगा. अगर सनलाइट है तो नहीं आएगा, स्पॉटलाइट है तो आएगा. तो उसकी रिफ्लेक्शन सेट आती है जो उसको कास्ट हो रही है प्रॉपर स्क्वायर बना रहा है वो. हाँ, वही तो बोल दिया. तो उसके लिए तो ये इन एंड आउट. अभी आपको शार्प नहीं आ रहा है. देखो, इफ आई जस्ट सेलेक्ट इट आउटसाइड, देयर इज नो शार्प. ठीक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है वो. हाँ, उस ऑब्जेक्ट पे कह रहा था वो शाइनी है ना, उसमें प्रॉपर पता लग रहा है कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट से ही आ रही है. हाँ, ये स्क्वायर नहीं बदलेगा, वो तो कंपल्सरी है. विंडो का आपको कैसा है शार्प, हाँ वो तो शार्प भी आएगी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड. अगर मैं ये पॉइंट लाइट लगा दिया इधर, ओके, अगर मैं पॉइंट लाइट लगा दिया, मेरा रेड लाइट डिलीट कर दिया, तो ये तो गोल आ गया अभी, क्योंकि पॉइंट लाइट वो लाइट ही वही है ना, वो रिफ्लेक्शन में तो वो आएगा ही आएगा. अभी फॉर एग्जांपल ये ट्यूबलाइट का आपको इसके अंदर कैसे आएगा, वही रिफ्लेक्शन वही स्क्वायर में आएगा. सर पहले हमको जैसे आपने कही ना कई जगह लाइट नहीं बहुत पाती है बनानी पड़ती है उस चीज, तो हम लगाएंगे तो वो तो पता लग जाएगा ये तो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है. हाँ, उस केस में क्या करेंगे? इसके लिए अगर आप बाउंसर बोल के बोल रहे हो, हाँ. ओके, तो बाउंसर हो तो क्या होता है, हम लोग लाइट लगाएंगे, लाइट ये ऑब्जेक्ट से हम लोग निकाल दे सकते हैं. यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर लाइट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट. वो लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में से वो लाइट को ऑफ कर सकते हैं. यू कैन ऑफ दैट, यू कैन ऑफ दैट. ये बॉल है इस पे से बाउंस करा. हाँ, मैं ऐसा मतलब कि लाइट को इस तरफ कर देता हूं नॉट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट. हाँ, आई जस्ट
direction, the light direction would be towards the ball. Okay. Then it will bounce and come out. वो बाउंस हो रहा है बोलते इतना टेंशन ही नहीं है ना. It is not bouncing. लेकिन see, I did something like we will call this particular thing as a light centric or okay object centric. ये ऑब्जेक्ट से वो लाइट निकाल देंगे, लेकिन वो लाइट रहेगा, उसका लाइट इसके ऊपर गिरेगा, शैडोज नहीं आएंगे, शैडोज निकाल देंगे, उसका रिफ्लेक्शंस निकाल देंगे. We can switch it off. तो मुझे खाली इस ऑब्जेक्ट पे चाहिए लाइट और नीचे ये हाँ फ्लोर निकाल सकते हो, फ्लोर निकाल हाँ फ्लोर निकाल सकते हो. Okay, that is a process. We have it. That you can remove it. Okay. कैमरे से भी निकाल सकते हैं. हाँ कैमरे से भी निकाल सकते हैं. इधर से निकल गया तो कैमरा से निकल ही गया. सर मान लो फ्रंट पे ही है वो लाइट. जैसे कई बार माया से रेंडर करता था मैं. हाँ फ्रंट पे होती थी, मेरे को लाइट नहीं दिखानी होती थी, बस उसकी जो चार माया में आपको ठीक है इधर फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग हियर आई जस्ट टेल यू. सर वो रेंडर में प्रॉपर आता था, वो हाँ. स्क्वायर बना हुआ. ठीक है. Okay. See right now. Here I can't see. Here what exactly the in Autodesk Maya light and object refer to the how lights are objects are linked in the scene. So हम लोग वो कैसे है? See a light set of a created lights. Okay. किधर निकाल सकते बोलते you can see that. Okay. हाँ. Select the light to include in the set. Okay, light source of panel. बाद में उसमें इधर सिंपली ये सेलेक्ट एडिट में जाओ, क्रिएट लाइट सेट बनाओ, उसमें से वो लाइट को ऑफ कर दो. बाद में हाँ हो गया था वो. हाँ वो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं. If you are able to do it one particular software, you can do it. See that is the reason right now Unreal where it is different. Unreal में आपको ये artificial lights जो है ऑटोमेटिक आ जाता है, because it is ray trace. इसमें आपको इतने सारे लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है. जितना हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में लगा रहे हैं उतने सारे लाइट्स आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है. I'll show you. Okay, right now this particular thing it is understood, right? We can remove that, but it is not needed because you need not to keep your bounce lights. अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एक डायरेक्शन लाइट लिया मैंने, ठीक है. आई हैव टेकन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइट and I'll just go with props where we have don't have room there. 1 second. दो मिनट.
Okay, what I did right now, I have created a room. ठीक है, मेरा डायरेक्शन लाइट, ओके, डायरेक्शन लाइट ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है. सी राइट नाउ आई एम गेटिंग ए बिट ऑफ बाउंसेस, राइट. इसमें ऑलरेडी बाउंस आ रहा है, मुझे बाउंस लाइट क्रिएट नहीं करा. मैं जब ये लाइट सेलेक्ट करता हूं मैं, सो हियर, ओके, you will get one option called as what is that? Indirect light. See, if I'm increasing this one, indirect light, what happened? Ray trace enable करा मैं. Enable करने के बाद what happened? See, did I add any extra light? No. See, if I make it 30, see, ray trace will do your work. आपको एक्स्ट्रा लाइट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. इसमें और एक बात भी है. For example, right now it is like this. See, it is going slow and this one, right? That will be because of the auto exposure. तो हम लोग वो ऑटो एक्सपोजर भी ऑफ करेंगे. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है. अब क्लासेस में बताता हूँ. राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज देयर, राइट. ये पर्टिकुलर मटेरियल कौन सा है? ये वाला है, राइट. नाउ व्हाट आई डू, सी, आई हैव केप्ट दिस लाइटिंग हियर, सॉरी, इधर बाजू में लगाया मैंने. दिस इज द लाइटिंग, ओके. Now I click it here. Now I am making it full white. What I am doing? Just making it full light. जब मैं ओके बोल दिया, ठीक है, सी, मेरा लाइट और ज्यादा बढ़ गया. अगर मैं इसको अगर ब्लैक बना दूं, यू कैन सी द डिफरेंस. मैं लाइट को ब्लैक करा बस उतना ही, लेकिन उसका बाउंसेस भी चले गए. सी, कैन यू सी दैट? इफ आई मेक इट व्हाइट, it is becoming more white. I am not changing any kind of light, nothing. So that is, see, why Unreal is becoming special, because of these kind of optimizations. आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है. It is doing the magic from the material and from the light itself. लाइट में क्या ऑप्शन है? What is that option is called? Indirect light. ये जो आपने जो पूछा है ना, this is already there in the presentation. Okay, मैं जिसमें आपको दिखा रहा हूं अभी, right now, if I just say, ये बोलने के बाद वो बोलने वाला था मैं. Okay, point light सब कुछ हो गया. Now see here, wait, I should, no, one second. See here you have it. In this indirect light को हम लोगों को बढ़ाने के लिए 3 options है, 3 ways है. Adjusting the indirect light intensity in direction light, working with the material, or add extra lights. Add extra lights is no use, right? मेरा रेंडर का टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, तो उसमें मुझे इतने सारे ऑप्शंस, रे ट्रेस, ये पूरा यूज करने की जरूरत ही नहीं है. So it is making my work more problematic. So what I am doing here, we are working with 2 things. What are the first 2 things? You can increase your indirect light, and one more thing, this one, right? उससे आपका प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लाइट लगाना, वो इसमें मिरर में दिखना, उसको ऑफ करना, लाइट सेंट्रिक करना, ऑब्जेक्ट से लाइट को डीलिंक करना, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, पूरा वर्क शॉर्टकट हो गया. अंडरस्टूड, राइट. नाउ बिफोर दिस, ओके, नाउ ओके,
This particular point I have to explain. Static lighting, stationary lighting and movable lighting. इसके बारे में सुना है क्या कभी? हाँ? नहीं सुने. Anyone? यूज किया. हाँ? हाँ. यूज किया. हाँ. What happened? Feeling bored? क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये वाले 3 नाम पहले भी सुने. नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्लास बोरिंग लग रहा है? हाँ, नहीं ना? नहीं, सब लोग डल हो गए बोले तो यार. अभी आज मैं बहुत ही कम ही बोल रहा हूँ. ये बहुत ही कम है. मैं अभी एक रूम का लाइट नहीं बोल रहा हूँ. we will do that in the next class. Okay, this is very low only. Still we have to go. अभी क्लास है बहुत. So don't get discharged, right? ठीक है. स्टैटिक लाइट, स्टेशनरी लाइट, मूवेबल लाइट, ये 3 चीज ये अनरियल का ही ऑब्जेक्ट्स, अनरियल का प्रॉपर्टीज है. ये हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है. तो ये स्टैटिक लाइट क्या हो गया बोले तो स्टार्टिंग में द मेन मोटो ऑफ योर गेम इज व्हाट? टू मेक इट ऑप्टिमाइज, राइट? टू मेक इट ऑप्टिमाइज. अब ये मैं स्टैटिक लाइट लगा दिया तो व्हाट इट विल डू मींस इट विल बेक द लाइटिंग. वो लाइट को क्या कर देता है? बेक. तो वो लाइट जो है मैं गेम में जब जाता हूँ इट विल नॉट इंटरैक्ट विद मी. मैं अगर वो लाइट के नीचे चले गया, मेरा लाइट लगा दिया तो स्टैटिक बना दिया. अगर मैं वो लाइट के नीचे चले गया, मेरा शैडो, उसका शैडो फिक्स है तो मेरा गेम के ऊपर लोड कम है. समझो वो ऊपर वो लाइट्स है. ओके, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यू हैव लाइट्स एंड योर कैरेक्टर इज रनिंग हियर. उसको मुझे डायनामिक लगाने की जरूरत नहीं है. डायनामिक लगाने से मेरा क्या होता है? लोड बढ़ेगा, मेरा गेम पे लोड बढ़ेगा, राइट? ऊपर मुझे लेकिन लाइट लगाना चाहिए. तो बिल्डिंग में ऊपर तो लाइट है तो उसको मैं क्या कर देता हूँ? स्टैटिक लगा. सो वो स्टैटिक लगाने से गेम के ऊपर मेरा लोड नहीं आया. सो वो ऑप्टिमाइज बन गया. ठीक है. थोड़ी चीज है मुझे, इट मींस इट नीड नॉट टू अफेक्ट मी बट इट हैज टू चेंज द कलर. वो कलर चेंज कर सकता हूं मैं. दैट इज समथिंग लाइक ए स्टेशनरी. स्टेशनरी में क्या है? यू कैन चेंज द कलर एंड द ब्राइटनेस बट यू कांट रोटेट और वॉट एवर इट मे बी. मूवेबल जो है दैट इज समथिंग लाइक इट विल अप्लाई देन एंड देयर इटसेल्फ. सो मूवेबल इज द कॉस्टली. ओके, राइट नाउ यू पीपल आर लकी. लाइक आपका जो गेम इंजन है राइट नाउ 5 के ऊपर, आप स्टैटिक और स्टेशनरी यूज करने की जरूरत ही नहीं है. Because even movable is been optimized in such a way like it will render fast. ये जो भी है इससे पहले जब हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. लेकिन ये पॉइंट बोलना इंपॉर्टेंट है बिकॉज when you open your Unreal, okay, the moment when you select any of the light, okay, the moment when you select any of the light, okay, here see you have these 3 options. स्टैटिक, स्टैटिक बोल के मैं लगाते इधर देखो प्रीव्यू बोल के बोल दिया. स्टैटिक बोल के डायरेक्शन में लगाते वो क्या बोल दिया? प्रीव्यू. प्रीव्यू हो गया बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो हियर बिल्ड एंड मुझे बिल्ड ऑल करना पड़ेगा. देन वंस इफ आई बिल्ड देन दैट पर्टिकुलर प्रीव्यू विल बी गॉन. ओके, या भी नहीं. So it will build. You have to build every time to see the preview. अगर आप अभी लाइट का डायरेक्शन ओके चेंज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, सी अगेन यू हैव टू गो एंड मेक इट एज ए बिल्ड. अगेन यू हैव टू डू. ओके, the moment when you are in static it will tell you this particular problem. See, lights need to be rebuilt. दिखा दे रहा है. The moment when I go to stationary वो चले गया, ऊपर का मेरा प्रॉब्लम भी चले गया. स्टेशनरी में क्या क्या चेंज होगा? स्टेशनरी में आपको कलर एंड ब्राइटनेस. रेड बॉल
हाँ वॉल की नहीं, लाइट की। अगर आपको इवनिंग लाइट बनाना है तो ऑरेंज कलर बनाना पड़ेगा, मॉर्निंग है व्हाइट बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक नियर द वाटर, you have to make it as a blue. That you can do, and you can change the intensity. Now if you are in movable, no issue at all. It is completely dynamic right now. Understood? So ये तीन वही चीज है। अगर मैं एक सीन में, if I'm just keeping okay point light and I'm making it static, ठीक है? Now if I just duplicating 1, 2, 3, 8, is also updated. All are stationary. Okay. Now it is not creating that particular problem, but what happens means it used to give us a into symbol कि आप 6 लाइट से ज्यादा नहीं लगा सकते। 7th लाइट आपको आते ही वो एक इंटू मार्क दिखाता था। ओके, दैट इन द olden softwares we used to see. Okay. I'm able to see images also. When the time comes, I'll show you that image. Okay. अभी नहीं आ रहा है बोल तो we can't show you. But if you have multiple things, then it will become into mark दिखा देता है कि it will not work. Okay. If you are in static, but these days you don't have any problem of that because you are directly going and keeping it in directly. What you are doing? कौन से में लगा रहे हो? Movable. Okay. See here only when you go on top of it only it is saying totally dynamic. Okay, whole scene dynamic shadows and slowest rendering. Okay, इसके ऊपर stationary पे जा रहे हो, it will directly say can't move. Okay, allow partially baked lights. And if you go on static, see static lights is changed. Okay, fully baked lights, faster rendering. Understood? वो उसके ऊपर जाते हैं वो बता दे रहा है. Why? How it will work? Because if I am using game, किधर use करना है मैं बोल दिया, right? In a game, if you have in a longer place, right? Now, go here, right? Okay, mobility, right? उसके बाद में we done with direction lighting. Okay, these all lights. Oh. Now we are coming to HDR. Okay, we are coming to HDR. Now I'll just delete my this direction light also. Everything is gone. Okay, skylight भी बताता हूँ मैं. Don't worry. Now just if I drag and drop my HDR into the scene. See right now, whole area it got lit. But if I select this peer and if I press F, see it is just an HDR. Right? It is just a HDR. See right now. Okay. I'll move this. So that we can see our characters. See? ये पर्टिकुलर ग्राउंड जो है अभी HDRA से लिंक है ना, अगर इसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, ओके, यू कैन सी ए डायमंड शेप इन योर सीन.
कैमरा चलेगा। Here. See, this particular thing, okay, is called as a projection center. If you make it down, the ground is becoming smaller and scaling. Now, if you make it bigger, moving it up, so it is going bigger. Okay, this is the one which will change the projection. Okay, आपको अगर ये HDR change करना है, कुछ भी नहीं, इधर click करो and you can change the HDR. Okay, see right now the lighting is so nice. लेकिन इसमें आप खाली इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, आप कलर चेंज नहीं कर सकते. You can't change the color in this. What you can do is you can play with the intensity. इसमें अगर कलर चेंज होना बोले तो मुझे और एक आर्टिफिशियल लाइट लगाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? आई हैव टू कीप वन मोर लाइट. इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन रेमेडी है स्काईलाइट. ठीक है सर HDR के लिए कोई एंड्रॉइड ऐप है? हाँ, एंड्रॉइड ऐप है HDR के लिए? खुद का बनाना हो तो? खुद करना हो तो मुश्किल है. आपको टीटा बोल के एक कैमरा है वो खरीदना पड़ेगा. जैसे IIT का अभी है. सी फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम कैमरास, इसमें भी आप HDR बोल के ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हो. लेकिन दैट हाउ यू हैव टू क्लिक, you should be in one particular angle and you have to click it round, then it will stitch and it will give it to you. लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, this particular thing HDR how, okay, I'll show you this particular okay. सी ये पूरे ऑलरेडी HDR ये सर हमको फ्री मिल जाते. दिस इज अ वेबसाइट. ओके, मैक्सिमम यू विल गेट. लेकिन आपको HDR क्यों चाहिए, वो पर्टिकुलर एरिया का अगर आप शूट कर रहे हो देन यू रिक्वायर. उसके लिए मुझे जब ये वाला सी it is having a skew, right? See here, you can see like there is a skew here. वो जो इमेज स्टिचिंग है उसमें हम आ जाते हैं. इफ यू आर टेकिंग इट मैन्युअली, वो इमेज में एक पॉइंट में यू विल कम इनटू द पिक्चर. हाँ, लेकिन हाँ उसमें नीचे का जो लाइट है वो प्रॉब्लम हो जाता है ना. HDR लाइट सोर्स तो आ जाएगा आपको, लेकिन क्वालिटी उतना नहीं. आप डायरेक्ट इसमें से कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू क्लिक द पिक्स एंड यू हैव टू स्टिच इट. वो स्टिच कर देता है ऑटोमेटिक. ठीक है, अगर कोई ऐप है तो मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आज तक मुझे तो मैं व्हाट आई यूज मींस आई यूज वन टीटा इज वन ऑफ द कैमरा. एप्पल तो है वो 13 बिट वाली, वो पेड है. एंड्रॉइड में नहीं है तो कोई इवन में दैट आई यू गेटिंग हां आई यू गेटिंग वो 10 बिट है वो. वन सेकंड वो लगा देगा. see this is the camera. Okay, one click it will take you completely. 360 camera. Okay, one click you will get it. One second, you are saying Are you getting the quality from this camera? which one? This one, yes. हाँ, टीटा से मिल जाएगा. This particular camera will give you the best quality. उसको बोला कि अगर आप अपने खुद की खींच रहे हो तो बेसिकली किसी पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे, चाहे हम आए हमारी शैडो आ जाएगी. हाँ, तो वो अगर हम उसको एज अ मैप यूज करना चाहें वो खराब हो जाएगा. नहीं पूरा खराब नहीं होगा. आपको मेन लाइट सोर्स तो आ जाएगा, लेकिन इज समथिंग लाइक ये मैनुअल स्टिचिंग में लाइटिंग दो जगह पे. सी व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, आई टेल यू. एक फोटो को वो स्टिच करता है. जब वो दो फोटो को स्टिच कर रहा है, दो फोटो अगर ओवरलैप हो गया, उधर क्या हो गया, लाइटिंग डबल एक्सपोज हो गया. राइट ना. जब हम लोग मैन्युअली लेते हैं ये प्रॉब्लम होने की चांस है. हम लोग क्यों ले रहे हैं फोटो, ताकि मेरा लाइट सोर्स आ जाए. अगर वो लाइट सोर्स में डबल एक्सपोज हो गया देन इट इज ए प्रॉब्लम. So it is something like it is never suggestible like to take photos like this. इससे पहले तो I should say like my experiences are very bad few. One of the
टॉलीवुड कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था वन प्रोजेक्ट के लिए. व्हाट दे डिड यू नो, एक सीन में से मुझे एचडीआर कंपलसरी एक सीजी कैरेक्टर लगाना था एक कार को. सो लाइटिंग कर रहे थे हम लोग. सो व्हेन वी आस्क्ड व्हाट दे डिड ऑन द टॉप ऑफ द कार, ये स्टेनलेस स्टील का ये रहता ना बर्तन, वो लगा के फोटो निकाल के दे दिए. हाँ, इससे एचडीआर ले लो. That is what the people think. In the industry, see, people will prefer. तसला था क्या सर, वो डोम की तरह यूज कर रहे थे उसको. हाँ हाँ, foam wall and सर जैसे कि आप बोल रहे हो, आप ये वाला कैमरा से एचडीआर अगर निकाल लेते हो तो इसमें क्या शैडोज वगैरह कहीं हद तक सॉफ्ट हो जाती है फोटो किसमें? इसमें? हाँ, क्योंकि see this one. These are the two things, okay, which people use for checking. कौन से भी आप हॉलीवुड मूवी में, okay, Indian movies very less these people will use this standard. Only Rajmouli is using, and in Bollywood Sanjay Leela Bhansali. Oh, till now these are the only two people who use this properly. Okay, this is why to get the HDR and diffuse. And you know, you are seeing the color palette. Huh? That color palette will cost you around 20 to 25,000, 30,000. अगर professional use कर रहे हो, even they will not allow you to touch with your finger also on top of the color. They take care of that so preciously because of these things only you will get a proper colors. Okay, that is called as a color palette. Okay, so these are the things which we have to follow to get a proper lighting. ये पूरा HDR है. इससे पहले ये पर्टिकुलर बॉल जो है, इससे लाइट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके लाइटिंग मैन्युअली लगाते थे. अभी HDR आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? लेकिन आपको प्रॉपर HDR होना है, देन यू हैव टू यूज दैट ऐप. ओके, 361. अगर आपको फिलहाल के लिए आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत कुछ मिल जाएंगे इधर इसमें. हाँ, हाँ. This one is something like you will get maximum. Okay, see here, so many are there. Natural, okay, partly cloudy, skies. So you have lot of varieties, and these all are free. He's not charging anything, and you get 4K and 8K also. See here, 4K. गूगल मैप से भी डाउनलोड कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी मैटर्स. This quality will be more good. हाँ, ये सर तो पता नहीं हाँ, DSLR. बट अगर आप थीटा वाला आपके ये भी घट जाएगा क्या? हाँ, आप थीटा कैमरा my theta camera is of 8K. हाँ, that is enough. Okay, right? Okay, are you able to understand what is an HDRA? HDRA का abbreviation कोई बता सकता है? हाँ, हाई डेफिनेशन, हाँ, रेंज इमेज. ठीक है, ये पूरे सब लोग याद कर लो. अब मैंने प्रेजेंटेशन में डाल दिया मैंने हियर. ओके, मैं तो प्रेजेंटेशन में सब कुछ दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है? सो यू कैन गो थ्रू दैट, बट इट इज नॉट लाइक यू हैव टू रिमेम्बर इट. ओके, अगर आप याद रख लिए तो बहुत अच्छा है, राइट? ओके, नाउ द फाइनल वन इज सन एंड स्काई. ओके, ये वाला मैं ओके HDR है, मैं डिलीट कर दे रहा हूं. ठीक है, अभी मेरा स्काईलाइट को लेके आया. स्काईलाइट में मैं इधर आई कैन चेंज टू माय HDR. ओके, इससे पहले का और इसमें क्या फर्क है? पहले डोम बना रहा था वो. हाँ, और इसमें पहले में हमारा डोम बन गया था, तो वो आर्टिफिशियल वो क्लाउड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये क्लाउड्स चाहिए और उसका लाइटिंग चाहिए. तो मुझे HDRA में क्या कर रहा है, वो इमेज दे दे रहा है. इट इज गिविंग मी एन इमेज, राइट? बट आई कांट यूज दैट. some places sometimes I need my kind of a clouds. Then what is important? Your skylight. समझ में आया स्काईलाइट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? इसीलिए पहले वो बताया था मैं. पहले अगर हम लोग ये बताया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड.
So HDR है और इसमें फर्क क्या बोलते वही एक फर्क है. And here it is something like again the same, your light color you can change. In that we are not able to change the light color, right? We can change the intensity, right? Now the final one is sun and sky. सन एंड स्काई में गए तो आपको फुल ब्राइट हो गया, राइट? लेकिन इफ यू ओपन इट हियर, इसने क्या करा, 3-4 लाइट को लेके आके उसमें एक में सेट कर दिया, वन पर्टिकुलर लाइट. सी नाउ इफ यू वांट टू गो हियर, ओके, कंपास में यू कैन चेंज द कलर्स. ओके, नाउ इफ यू गो टू skylight, okay, you can change to whatever the HDRA which you want. Okay, and now you go to direction light and you just decrease your light. See, मैंने लाइट को डिक्रीज करे. स्काई एटमॉस्फेयर मेरा क्लाउड्स को पूरा कंट्रोल करता है. अंडरस्टूड? So this is something like one particular thing, it is giving me all the solutions. Okay, understood? So here also I can change the global vector parameter. So it means it is something like red color जो red है, okay, that you can change. And okay, this is for compass के लिए. Okay, compass के लिए हमको जरूरत नहीं है. So sky color we are changing it here itself. Done. Now if I say like, इससे पहले कोई पूछा था like shadows. Now ये skylight के लिए मैंने shadows ऑफ कर दिया. अगर मैं for example I'll keep one spotlight here. ठीक है? अभी मेरा क्या हो गया, 2 shadows आ गया, राइट? इसमें जाने के बाद, ओके, ये स्काईलाइट में जाने के बाद इसका मैं कैश शैडोज ऑफ कर दिया, डायरेक्शन लाइट का कैश शैडोज ऑफ कर दिया. क्या हो गया, उसका शैडोज चले गए. सर मैं खाली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही कर रहा हूं. ऐसे अगर जिसको आगे सारा मिक्स हो जाएगा, खाली का पर्टिकुलर उसी जो सर्कल है उसका कर रहा हूं. Then it is something like this. I never used it, but I think you will get here. One second. Probably वो ऑब्जेक्ट के पूरे कैश शैडोज, लेकिन वो पूरा कैश शैडोज बोले तो it will remove from the all the lights. From one light if it has to done means I'll tell you. Okay, this I never worked out, but I'll tell you. But shadows off करने के लिए this is the thing. Understood right now? You can switch off the shadows, लेकिन एक लाइट से निकालना है बोले तो that I will tell you. Okay, but it will be here only somewhere. Okay. नहीं, it is something like collisions रहते हैं जिसमें से मुझे ये ऑब्जेक्ट से निकालने के लिए एक चांस रहता है. I know about the collisions, but specifically light हम लोग नहीं निकाले because in this we never worked for that, because light centric करने की जरूरत ही नहीं है, because bounce lights हम लोग नहीं लगाते हैं, so ये problem कभी भी नहीं आया था. But I'll look into it. Okay, I'll tell you. Okay, now this one. Okay, light. अब तक जितने भी मैंने लाइट्स बताया आपको समझ में आया? Are you able to understand everything? Right. Now, just और एक 10 minutes बोल के मैं आपको practically छोड़ देता हूँ. Okay? One more point I have to tell. हाँ, this is important. लाइट का है रेडियस साइज. अच्छा ये बोल दिया ना मैं, ब्लर हो जाता है, राइट? One more thing, enable ray trace. So this I will show you practically. Okay, I think I have shown you right now, but still again I will show you. Now this one, if I go here, okay, now if I increase my radius, can you see here there is a cut? Still कितना भी होने दो, मेरा कट आ गया. Now if I go for, okay,
रे ट्रेस, रे ट्रेस में जाके मैं इनेबल कर देता हूं, क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, राइट। नाउ देयर इज नो सच कट, लेकिन अब ये छोटा लाइट है इसीलिए आसान से हो गया। अगर ये बड़ा लाइट है, रे ट्रेस इधर इनेबल कर दे, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, इट विल टेक टाइम, अंडरस्टूड। दिस रे ट्रेसिंग, बी केयरफुल व्हेन यू आर इनेबलिंग। So इसके बाद वो रेंडर करेंगे, then the render will be, हाँ, as per this one it will take. it will not take that much Okay, time. then for that you have to go, okay, this one I'll tell you. Okay, you people go to project settings. Okay, project settings में जाके आप रेंडर में जाओ, ठीक है, हियर मेरे ख्याल से आप सब में इनेबल रहता है इसीलिए नहीं बोला मैंने। आप रेंडर में जाओ, रेंडर में जाके ओके लूमेन में जाओ, check here, it should be lumen, okay, software, okay, this one it is fine, these both are okay, and this particular, see, use hardware ray tracing when enabled, you just check this on, okay, this one you have to check this on, and one more is ray trace में जाओ, okay, and while editing, yes. That's it. Cache. That's it. Yeah. Lumen एक चेक कर लो, enable ray trace एक चेक कर लो. That should be on. To give you, बाद में हम लोगों को lumen में जो render, ये render जो है उधर भी काम करना है बोले तो, then you should enable these things. Okay. But after this, if you just save and just close it, I think it will ask for you to restart. Okay, if you change anything settings there, sometimes it will ask, no problem, you can just do the restart, it will be done very fast. Okay, now that is one. Okay, you need a break for 5-10 minutes. इसके बाद में 3 point light एक बता देता हूं मैं करके, and one more I'll tell, this one, what is this, PPV, post process volume. Post process volume will be very interesting. सर वो है वॉल्यूमेट्रिक, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक को टाइप करता है। नहीं यार, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक फ्रॉग भी एक है, लेकिन पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम अलग है। ओके, ये दोनों चीज बोल के मैं आज के लिए क्लोज करता हूँ। कम बैक इन 10 मिनट्स। एंड नेक्स्ट वीक अगर आपका फाइल लेके आ गया है तो नेक्स्ट वीक बोलते हो, सैटरडे, सैटरडे फर्स्ट।
here, everyone. So this is something like, okay, if I go to my top view, I've kept 3 lights right. Okay, 3 lights. So even if you go to any of the moment, 3-point lighting, उनके मारते ही you will get the diagrams. See, key light के exact opposite में रहता है कभी भी backlight, rim light. This is one logic you have to follow. And हमारा कैमरा जब रहता है ना, कैमरा से 45 डिग्रीज में मेरा फिल लाइट रहता है, 45 डिग्रीज में की लाइट रहता है. ओके, सो योर कैमरा प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, की लाइट अगर आपका इधर से है, इस तरफ से है, फॉर एग्जाम्पल इट इज समथिंग लाइक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, देन योर फिल लाइट पोजिशन ऑल्सो विल चेंज. अंडरस्टूड? बिकॉज की लाइट जब इस तरफ से पड़ रहा है तो मेरा एग्जैक्ट ऑपोजिट में बैकलाइट रहता है जो कि मुझे एक रिम देता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर, now in this, so this is all based on your 3-point lighting mood set करता है. See right now the how the shadow is. So in this key light position is 45. Okay, shadow देखो कैसा है. The moment when you are changing your key light, okay, without your bounce light, see how it has become. It has become like a ghost, right? आधा फेस दिख रहा है. ये wrong है completely. Okay, see right now this is also wrong. This is what is the backlight. बैकलाइट से क्या हो रहा है, मेरा रिम लाइट आ रहा है. ये हम लोग जब सिनेमैटिक करना चाहते हो आप आपका सीन को और थोड़ा, सो बैकलाइट अगर आप थोड़ा एलिवेट कर दिए, देन इफ इट इज ऑन द हेयर देन इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर सिनेमैटिक. ठीक है, सी राइट नाउ दिस इज समथिंग लाइक ए गोस्ट. ओके, ये मेरा फोटोग्राफी का क्लासेस है. सो ये गोस्ट लाइटिंग हम लोग नहीं करते. इसको गोस्ट लाइटिंग बोल के क्यों बोलते हैं? व्हाई यू कॉल दिस एज ए गोस्ट लाइटिंग? टेल मी. सोलो साइड है जैसे वो भूत की कहानी में सुनाते हैं. हाँ, नीचे से लाइट आ रही होती है. हाँ यार, उसको भूत बोल के क्यों बोलते हैं? पर वो सीन क्रिएट करने के लिए हाँ, ड्रामेटिक लाइटिंग होती है. हाँ ठीक है, अगर नीचे से लाइट लगा दे तो भूत क्यों बन गया? क्योंकि सब लाइटिंग जो लाइट आ रही है वो बहुत फास्ट है. हाँ, I'll tell you. In your real world, okay, can anytime you can see like sun is showing from the bottom? नहीं ना. तो हमारा माइंड क्या है बोले तो इट विल ऑब्जर्व द थिंग्स. इसको पूरा कैसे है पता है बोले तो लाइट विल बी फ्रॉम हियर टिल हियर ओनली. दिस इज द थिंग. इससे नीचे गया तो नो लाइट. सो इट कांट अंडरस्टैंड दैट. व्हेन यू डू ए डिफरेंट लाइटिंग, नीचे से जब लगाते हो उसको आउट ऑफ बॉक्स जब दिखता है, सो इट विल पोर्ट्रे दैट एज ए गोस्ट, समथिंग लाइक. इससे हम लोग डरते हैं, right? It will make. So that is the reason when you want to frighten someone, you have to do something which will not happen in a regular life. Sudden से कोई आ जाना जो regular, कब डरते हैं हम लोग? When something is happening, when your expectation is there, you will never fear. So something unexpected thing when you do, even it is lighting or anything, when you want to tell a story, when unexpected thing when you involve it, then people will start fearing. Then that particular ghost theory, whatever it comes into the picture. So in this also it is something like the same way. Okay, this last trick what I want to show you is, see whatever you see here, what is this? These all completely as a one key light. Key light कभी भी सिंगल लाइट ही होने की जरूरत नहीं है. आप मल्टीपल लाइट्स उसी डायरेक्शन से आप लगा दो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से. इतना बिल्डिंग फायर पे है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट. लेकिन इसमें की लाइट कौन सा हो गया? दैट इज द वन, राइट?
So key light or bounce light need not to be only one light. It can be multiple lights, but the direction is important. Understood? The direction is important. Okay. We'll go back to our subject. Right now, see here. Now I've kept 3-point lighting. Okay. So if I press G, see my character is properly highlighted. Okay. Properly highlighted बोल के हमारा character को कब बोल सकते हैं? When you can say like it is a properly lighted. Now in this, if I want, okay, I can spotlight जो है इसका जो intensity है थोड़ा कम कर सकता हूँ मैं. Still I can reduce. Okay, but still yes, मेरा rectangle light. Okay, now I can. This is something like a backlight. Okay, this one is something like. Okay, bounce light. See, I need not to touch the lights. Just by adjusting these things, I can frame it out. More character को elevate कर सकता हूँ. लेकिन एक character properly lit बोल के कब बोल सकते हैं? उसकी जो edges है वो proper ना दिखे. Edges? हाँ. Proper ना दिखे. ठीक है, that is a good thing. But in more technical way. कब volume दिखता है? I expect answer from 3 of you and you also. Volume कब दिखता है? सीन से थोड़ा अलग दिख रहा होगा, इट्स हाईलाइटेड. Volume कब दिखता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर लाइटिंग हो, प्रॉपर है लाइटिंग आपके ऊपर, बोल के हाउ यू विल रिकॉग्नाइज? क्योंकि ये जो पीरी है आपको प्रोडक्ट में किधर भी हो लाइट लगा रहे हो, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिधर हम लोग एक जगह पे बोलते हैं कि ये लाइटिंग ठीक नहीं है क्योंकि हम फ्लैट लाइट जब आपको फ्लैट हो जाता है ना, देन यू विल नॉट फील ए प्रॉपर लाइटिंग. लाइटिंग कभी भी फ्लैट नहीं होना चाहिए आपका सीन. यू शुड हैव द डेप्थ. लेकिन वो डेप्थ को कैसे ट्रांसमिट करेंगे? एक कैरेक्टर के ऊपर इज 3 एलिमेंट्स. व्हाट इज दैट? हाईलाइट, मिड टोन, शैडो. व्हाट इज दैट? हाईलाइट, मिड टोन एंड शैडो. आप ड्राइंग बना रहे हो, एक कर्वेचर दिखाना है, कैसे करोगे? शैडो करोगे, मिड टोन करोगे, हाईलाइट करोगे. Highlight is nothing but a white. You add some shading and you add some depth. dark. हो गया, वो राउंड आ गया, उधर वॉल्यूम आ गया. अब इसमें अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा, राइट नाउ सी आई कैन सी ए प्रॉपर कर्वेचर. आई कैन सी द वॉल्यूम ऑफ दिस, राइट? अगर इसमें मैं पर ये वाला पीछे साइड completely killing this particular side. Okay. Yes, my fill light is there, but see what happened? क्या हो गया? उधर लाइटिंग प्रॉब्लम हुआ. लेकिन लाइटिंग प्रॉब्लम क्या हुआ? इधर ये एरिया पे लाइटिंग प्रॉब्लम हुआ है. क्या हुआ एग्जैक्टली? आपका नहीं फ्लैट हो गया है, आपको राउंड ही नहीं दिख रहा है. हाँ, इंटेंसिटी. जब जब सी इंटेंसिटी आप टेक्निकली बात कर रहे हो, ओरिजिनली उधर क्या हुआ है? जो आपको जो शैडोज है वो पूरे मर गए. हाँ, जो शैडोज है वो मर गए. शैडोज इज नथिंग बट व्हाट इज दैट? डेप्थ, राइट? नाउ इफ आई जस्ट डिक्रीज माय इंटेंसिटी, अगर मैं, ठीक है, इफ आई जस्ट डिक्रीज माय दिस वन, what it is showing right now, see, it is working on the shadows itself. Now how I am lighting खराब हुआ अच्छा हुआ, इंटेंसिटी कैसे है हमको कैसे पता चलेगा? I don't know that, right? I am adjusting a value but I am seeing the object, right?
ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, what exactly it is happening on the object is something like you are missing the curvature. When you miss the curvature, when you miss the depth, okay, your scene is gone. So what is important to get in your scene is the depth. Depth कैसे आता है हमको? शैडो से आता है. जब लाइट ज्यादा हो जाता है आपको शैडोज मर जाएंगे, जब आपका लाइट पूरा कम हो जाता है आपका शैडोज मर जाता है. So you should make your lighting so evenly. ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये बाउंस लाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर मुझे इधर से एक हार्श लाइट लगा दिए, मैं इससे पहले आपको फोटोग्राफी में एक इमेज दिया, इधर पूरा जेट ब्लैक हो गया, सो इट इज समथिंग लाइक ये पार्ट दिख रहा भी नहीं, सो इट इज नॉट राइट. अंडरस्टूड? सो हमारा लाइटिंग कैसे रहना चाहिए? कभी भी हमारा सीन में यू शुड एबल टू फिगर आउट द वॉल्यूम्स. अगर वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपका लाइटिंग खराब है. सर मेरा लाइटिंग कब खराब है? आपका माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा जब आपका सीन में फ्लैट दिख रहा है. When there is no volumes, then your thing is out. You know like 2D जो हम लोग देखते हैं ना, उसमें वॉल्यूम रहता है या नहीं? हाँ, होता है. सी फ्लैट 2D एक पेपर के जब हो रहा है दैट इज डिफरेंट. टॉम एंड जेरी है, वो 2D है लेकिन उसमें आपको वॉल्यूम दिखता है, राइट? वो 3 कलर्स में कट करता है, वो भी सेम प्रोसेस है लेकिन उसमें कट कलर्स रहता है, इसमें ब्लेंड रहता है. व्हाट इज द डिफरेंट? टून बोले तो क्या है? फॉर एग्जांपल इफ आई गो विथ ए टून रेंडर, आई से लाइक टून रेंडर बोल के मैं मारते ही, ओके, इफ आई से हियर, सी हियर, ये टून है लेकिन देखो 3 है, हाईलाइट है, मिड टोन है, शैडो, लेकिन कट कलर्स. डिफरेंस क्या है? ये कट कलर से वो है ब्लेंड. ये 2D में आ जाता है, वो 3D में आ जाता है. गॉट इट? सो फंडा विल नॉट चेंज. राइटिंग का थंब रूल है, वो कभी भी नहीं बदलता. गेम में कैसे मैनेज होता है ये तीनों लाइट्स वो ब्लेंड होती है गेम में ऐसा? हाँ, समझा नहीं. गेम में कैसे लाइटिंग अभी तो जैसे स्टैटिक नहीं है. यहाँ स्टैटिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग सीन में है तो फॉर एग्जांपल आप ये एरिया से जा रहे हो, ओके, ये एरिया के फॉर्म्स आपके ऊपर गिर जाना चाहिए. दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन से आपको हो जा रहा है. नहीं तो क्या करना पड़ता है आपको? जितने भी एरिया है पूरा एक एक लाइट लगाना पड़ता है. अगर इधर येलो है, इधर रेड है, ठीक है, मैं रेड के पास हूं तो रेड लाइट आना पड़ेगा, येलो है तो येलो लाइट आना पड़ेगा मुझे, राइट? Now for that, if I show you one example of a global illumination का, see, the simple meaning is that one only, it will show. See here, okay, in this, the spill of the red here, the spill of the blue on top of this, whatever it is in a global illumination बोल के मारते ही वो दिखाता ही वही है. This is what it happens. Final gather is something like smoothness, जो softness है. Softness किससे बनता है हमारा? Samples से. Okay, the way you increase the samples you will able to understand, right? Okay, मेगालाइट्स और इसमें फिर क्या चेंज है? जैसे मेगालाइट्स नहीं देखा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मेगालाइट्स बोल के लगाया, उसको रेड में लगा दिया. Still I need to explore that. I will tell you I am not getting time. Okay, but I'll teach you. आपका इसमें मैं बोल देता हूँ. Okay, so ये 3-point lighting है, ठीक है, right? And this is something like indirect light. This one I have told you. Okay, right. Now PPV मैं just अभी बोल के छोड़ रहा हूँ मैं अभी. Okay, we will elaborately we'll see this later. So just कुछ भी नहीं. What I'll do, I'll just delete these all. I'm creating one direction light. ठीक है, एक direction light create करा मैंने. Okay. Right. Now here if I say like coast,
Okay, I'll get my post process volume. ये दिख रहा है. Okay. ठीक है, right now it is there, huh? Now I'm not touching my sunlight. Okay, my direction light is same. Direction light को मैंने okay कलर को थोड़ा रेड बना दिया मैंने. हाँ, थोड़ा मैंने क्या करा, इसका इंटेंसिटी को बढ़ा दिया. ओके, स्मॉल चेंजेस एडिट. नाउ आई होल्ड माय पीपीवी. ओके, इसमें मैं क्या बोलता हूँ राइट नाउ, एक्सपोजर EXP. ठीक है, एक्सपोजर दबाते ही हियर आई गॉट इट. राइट नाउ आई विल एनेबल दिस वन and I'll go for manual. Okay, and I've done like this. Okay, now two elements I'm just changing right now. Okay, इसमें मैं अभी okay कम कर दिया मैंने. Okay, लेकिन कुछ फर्क पड़ा आपको? कुछ भी नहीं. Now see, if I just go here, if I went into scene, PPV में जाते ही क्या हो गया, डार्क हो गया पूरा. अगर मैं अभी इसमें ब्राइट अप कर दिया तो इसमें ब्राइट अप हो गया. ठीक है, अंडरस्टूड. अगर मैं पोस्ट प्रोडक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें मैं टेम्परेचर ऐड कर दिया. ओके, इसमें मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया. राइट, टिंट आल्सो हैव चेंज. ओके, द मोमेंट व्हेन आई कम आउट ऑफ दिस it is different. The moment when I get into this, it is different. Understood? So Mera, if I just add here right now a third person in this, now you people will explore on this PPV and tell me about this on Saturday. Okay, now if my character is there, okay, see right now, wait, where is that? See right now I'm inside the post process volume. Now if I come out, see, अगर मैं ये जो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम है इसको मैं स्केल कर दिया. राइट, and if I scale it like this, so this particular area, okay, is my that dark area. Okay, if I select this, okay, this area, this is zone of mine. If I come out of this, this is my zone. Now if I just play, okay, now if my character is running, he is getting into another area. So he ran into wrong directions. So if I play it here, see, the moment he got in, आप गेम में देखते हो ना, if you are going into another region, see, दो इफेक्ट हो रहे, राइट, द सीन इज गेटिंग अफेक्टेड. नहीं, मुझे ये पूरा मेरा मेन लाइट को मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ. अगर ये जो भी चेंजेस मैं पीपीवी को कर रहा हूँ पूरा सीन को हो जाना चाहिए, देन व्हाट आई विल डू, ओके, आई विल से लाइक इन्फिनिट में जाके
I'll make this as an infrared. So पूरा scene वही हो गया. I didn't touch my lighting, I didn't change my sunlight anything, but it affected everywhere. Understood? So post production volume में मैं अगर एक पोस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम में गया तो उधर स्नो भी गिर सकता है. मैं पोस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम से बाहर आ गया तो उधर से स्नो ऑफ भी हो सकता है. अगर मैं स्नो के उसके अंदर गया तो someone can attack me. Many things are there. This is one kind of a particular basic thing which I have told you right now. Okay? PPV के बारे में आप explore करो. I want you people to explore and give me a proper input on Saturday. Okay? Saturday our class will be on a particular lighting setup on one particular interior. एक इंटीरियर सेट लेता हूं. एक इंटीरियर में जब आता है देन आवर लाइटिंग प्रेफरेंसेस विल चेंज. अभी क्या हो गया, एक्सटीरियर है, आसान से हो गया बिकॉज मैं एक सनलाइट डाल दिया, हो गया मेरा ऑलमोस्ट लाइटिंग. बट व्हेन आई कम टू इंटीरियर आई हैव टू कीप मल्टीपल लाइट्स. आई विल गेट सम इश्यूज. ओके, हाउ टू सॉल्व देम, वेयर आर द डार्क एरियाज, how to highlight them, these all things, whatever these particular things are there, I'll teach you on Saturday. So with that हमारा लाइटिंग का जो है हम लोग स्टॉप कर सकते हैं किधर तक, बूट कैंप तक. बाद में इसमें एडवांस लेवल्स है, जब हम लोग सीखते हैं देन वी कैन कंट्रोल. पीपीवी का और ज्यादा डेप्थ में जाता है. यू कैन कंट्रोल दिस राइट नाउ. आप डीएमएक्स देखिए ना, डीएमएक्स पूरा के पूरा ब्लूप्रिंट से कंट्रोल हुआ है. वो लाइटिंग जो भी है इट इज नॉट मैन्युअली कंट्रोल, इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड वाया ब्लूप्रिंट्स. सो ब्लूप्रिंट से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत कुछ है. लाइटिंग का बेसिक्स तो यही है, वो तो किधर भी नहीं चाहिए. वो किधर यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ज्यादा कंट्रोल कैसे करते हैं, दीज ऑल एलिमेंट्स वी विल लर्न. लाइटिंग का बेसिक्स आर सेम, बेसिक्स तो ऑलरेडी हो गया है ना. हाउ टू यूज देम दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? How the reflection will come and everything. So these all elements we will learn. Understood? Right. इसकी शेप फिक्स तो एक है ना, Fix है. सर एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि जैसे कि जब गेम खेलते हैं